बारे में क्या सुना है? यहाँ के सुंदर नज़ारे, खाना, What's cooking today? शायद लोगों के बारे में सुना होगा, फैशन के बारे में तो नहीं सुना होगा, है ना? And see, this market is so dynamic. खैर, मेरा नाम है तान्या and I am on a mission to discover more about Nagaland. और इस सफर में मेरा साथ देंगे मेरे कुछ दोस्त। तो फिर हमारे साथ आइएगा जरूर for Tanya Khanijo presents Take Me to Nagaland. Hi guys and welcome to my channel. This is the last ever episode of Take Me to Nagaland and this is a little embarrassing कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ because this location is legitimately so beautiful. So for this episode we are here in Jakhama and Jakhama village में एक बहुत ही सुंदर campsite में है and guess what we are going to be doing in this episode? We are going to go to Zuku Valley and not just are we hiking there, we are also doing a cleanup drive in Zuku Valley. So we've gathered a bunch of locals here and with them we are going to be doing a cleanup drive here. But first let me show you where I am exactly because you have to see these rice fields for yourself to believe me that this is a very beautiful place. तो नागालैंड के सफर के आखिरी पड़ाव पर हम जा पहुंचे जखामा, जहां हम रहने वाले थे इन टेंट्स में, जहां नजारों और सुकून की कोई कमी नहीं थी। और साथ ही साथ हमें मिले हमारे कुछ लोकल होस्ट्स भी, जैसे कि जॉर्ज, अकुतो, कीको और आप्रे। और वो कहते हैं ना, द मोर द मेरियर। तो हमारे कुछ दोस्त जैसे कि चेतन, अभिषेक और गौरव भी साथ में थे। Tales we were told would never grow old here in Wichita. So at the campsite we have Apri and Kiko with us and we are going to, while making dinner, sing a local song. मुझे वैसे नहीं आता गाना but I'm going to just play some music along. Kohimate takyakan, nisalake putani, wokapara ahyakan, chalak chalak ahishe, mukuchan takyakan, sakuri ahishe, zene boto para ahyakan jagara. Kohimate takyakan, nisalake putani, wokapara ahyakan, chalak chalak. और कैंप्स में तो रहने का अनुभव ही कुछ और होता है, पर मज़े की बात ये थी कि इस कैंप साइट से हम जाने वाले थे ज़ुकू वैली की ओर। और अगर आप ज़ुकू वैली के बारे में नहीं जानते तो बहुत ही जल्द जान जाओगे। This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling you. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Are we sure it's the last time? Sure that this is the last time. Down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. And now the moon's in a heartbeat, going back where it all began. The tales we were told we would never grow old here in Wichita. So here we are, हम लोग अपने कैंप साइट से निकल के एक कम से कम I think 40 minutes we were on the road and road काफ़ी पथरीली थी यहाँ के रास्ते तक. So this is the hike trail to Zuku Valley. This is from the Viswama village side in Nagaland. तो हम लोग इस रास्ते से जाने वाले हैं. This रास्ता is mostly the easiest one to go to Zuku Valley. It's going to take us about 3 hours to get to the top. But on the way, we also have a bunch of volunteers who I'm going to introduce you to very, very shortly. And with the volunteers, we are going to be doing a cleanup drive because sadly, इधर पे भी बहुत सारा कचरा है. यहाँ पे भी लोग आके बहुत गंदगी मचाते हैं. तो जो भी यहाँ पे आए, please take care that you don't bring any plastic with you. Even the water bottle that you carry with you, कोशिश करो कि अपने साथ लाओ, अपने घर से पानी की बॉटल लेके आओ. लेकिन यहाँ पे मत थ्रो करो.
वहाँ ऊपर जाके आपको पानी मिल जाएगा बॉटल रिफिल करने के लिए. एंड इफ़ यू ब्रिंग एनी स्नैक्स विद यू, इट्स बेस्ट इफ़ यू कैरी इट अलॉन्ग विद यू एंड ब्रिंग इट डाउन विद you. So try and not litter the route. And for all the people who've already ended up littering the route, we are going to be cleaning it up and start with picking up some of the trash. Volunteers behind me. We'll do a quick round of names. Everybody tell your names. That's Kiko. Akho. We know Nicholas. Asu. Nico. Aviho. And Akito. That's me. That's Larissa. And it's been about 10 minutes and we've already got one full bag. So this is how much trash we have in Zuko. And most of it is plastic bottles. क्या आपने एक बात पे कभी गौर किया और इस बारे में अपने दिल की गहराई से एक बार सोच के देखो? हम इंसानों को हमेशा हरियाली, हरी चीजें और नेचर, इन सब चीजों से कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी और शांति महसूस होती है. क्या यही वो वजह नहीं है कि हम लोग ऐसी जगहों पे जाना क्यों पसंद करते हैं? So you know what's the sad part about all the trash that goes into the mountains and all the plastic that is disposed of? It can either be collected and we can try and our best and segregate and it and take it back to us, but more often than not, because there's no recycling facility here, it ends up getting burned, and that is exactly the reason why you should try and avoid disposing of these bottles and using them in the first place, because plastic, once that enters into the system, it is going to stay here forever. जी हाँ दोस्तों, हमारे पहाड़ों पे जो बढ़ता हुआ कचरा है, या तो उसे जला दिया जाता है या तो उसे पहाड़ पे बस छोड़ दिया जाता है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे कचरे को हमें डिस्पोज करने का. ये पत्ते, ये फूल, ये ऊंचे पेड़, ये नज़ारे, ये पर्वत, ये नेचर कब से है यहाँ पे? क्या हमें इस बात का अंदाज़ा भी है? एंड नेचर इज सो यूनिक. जिस इस जगह को ही देख लो, एक गहरे जंगल के ख़त्म होते ही एक ऐसी जगह शुरू हो जाती है जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बैम्बू उगता है और यहाँ पे लोग रह भी नहीं पाते हैं. We need warm clothes, yeah. I'm feeling cold. हमारा ये रहना बैग warm clothes वाला. So this is Zuko Valley, everybody. As soon as we entered Zuko from that part where we were climbing up, एकदम से पूरा नज़ारा बदल गया. All of the vegetation is also different, and it's all covered with bamboo and it's green, and you can see layers and layers and layers of just those rolling mountains. तो हम लोग अभी ज़ूको वैली की डॉर्मेट्री में आ गए हैं. यहाँ पे डॉर्मेट्री में एक केयरटेकर होता है
We haven't met the caretaker yet because आते ही हमने मैगी खानी शुरू कर दी. मैगी खा के काफी अच्छा लग रहा है. We are all playing a little game over here. The cleanup drive is done. We are going to take all the trash back with us tomorrow. This place, ये जगह ऐसा नहीं लगता कि ये हमें बुला रही है. थोड़ी सी खुशी का एहसास दिला रही है. वो मैगी खाना, न जाने जिसके पैकेट्स आखिर कहाँ चले गए. वो ग्रुप गेम्स, वो खुशी, वो हंसी. वो लोगों के साथ बैठकर खुली हवा के नीचे लेम जोक्स क्रैक करना और मे भी कुछ गोस्ट स्टोरी सुनाना. तो करने बैठे. थोड़े अपनीपन की फीलिंग आती है ऐसी जगह में. This is where we are bunking in tonight. It's pretty basic, but that's the fun of coming to Zuku. गुड मॉर्निंग गाइज. हम लोगों का स्लीपिंग एक्सपीरियंस इस डॉर्मेट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग था. हम लोग क्या बोले, हमने अभी भी सब कुछ पैक किया. दीज वर द स्लीपिंग बैग्स वी वर स्लीपिंग इन. I mean, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था and we are not people who believe in ghosts and all. या लाइक मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती. मैं तो फिर भी ज़रा करती हूँ, लाइक थोड़ा डर तो लगता है. But very honestly, we've heard a lot of stories about this place, about this being the valley of ghosts. In the night we actually heard like actual thumping. Yeah, we're coming. She heard I was the like, thumping. We heard this and I thought she was doing it. And I thought she was doing it to ward off the rats, but it and was she's neither like, one of us. आवाज़ सुनी and I'm like, I thought you did it. And she's like, I didn't do it, I thought you did it. I'm like, what? And then the next day we asked this other guy. Right below us. Right below. Like Right below, like we could feel it coming from below us. Honestly, fucking freaky. Yeah, but in all honesty, don't like get scared by our experience. Yeah, it's a good experience. It's a good experience. You should come here and experience it because यहाँ पे dormitory में बहुत सारे लोग थे. हाँ, तो डर नहीं लगता हाँ, उतना. so it's not like we were alone or anything, but it was a very interesting experience. So you should definitely come and feel it for yourself. So right now we're leaving for a hike to the valley below. ज़ूकू वैली की एक्चुअल यहाँ पे आने का पर्पस यही होता है कि आपको वैली जाना होता है. और आज का मौसम ऑब्वियसली बहुत ठंडा है बिकॉज द इंटायर नाइट इट वाज रेनिंग. सो द इंटायर वैली इज वेट टुडे एंड दैट ओवर देयर व्हाट यू सी इज अ हेलीपैड. सो वी आर नॉट गोइंग टू द हेलीपैड राइट नाउ, वी आर गोइंग डायरेक्टली टू द वैली एंड टू गो टू द वैली इट विल टेक अस अबाउट 45 मिनट्स. And here we see the first view of the valley. And हमारे साथ अभी लारिसा है, चेतन है, and we have a few more people with us. That's Nicholas, that's Pele, and sorry, what's your name? Aso. And that's Aso. यार ऐसे हरियाली के बीच में खुशी तो obviously मिलती है, but you know sometimes how you feel so extremely happy for a certain friend of yours. जैसे निकोलस का आज 100th ever ट्रैक था ज़ूकू वैली का, जिसकी वजह से वो अपने ट्रेडिशनल अटायर में पूरा तैयार हुआ अंगामी आउटफिट में. और उसके ऊपर से हमने उसकी बहुत सारी फोटोज खींची. लाइक इट वाज अ प्रॉपर फोटो शूट फॉर हिम. और मुझे पता नहीं कि आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट समटाइम्स बीइंग अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस हैप्पी मेमोरी गिव्स यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस. What is it called, Nicholas? Angami traditional food attire, but I'm not wearing my headgear because it's difficult to carry. Okay, but he's also carrying a dao over here. Wow. So dao is our main weapon. For Main Angami. weapon for Angamis. Okay. Wherever we go, we used to do our dao. Like in the olden days. You don't wear your traditional outfit all the time. Yeah, like we usually wear it during special Festivals occasions. and occasions.
Now that we are talking about cleaning Zuku, I have to also talk about the harsh reality. And the harsh reality here is कि कुछ trash जो है, the mini plastic that we are collecting, at least in the valley itself, it's getting burnt in the background because there's no other way of disposing it off. I mean, at least जो बड़ा plastic का सारा waste हम लोग collect करेंगे, we are going to take it back to camp in Jakhama and we are going to segregate all that trash and we'll try and recycle as much as possible. But the mini trash is just getting burnt here, which is a local practice. So I think the best way of dealing with trash is definitely dealing with it at source and not consuming it in the first place. Jैसे personally, I haven't been buying plastic bottles in a very long time. यार ज़ूकू वैली में क्लीन अप ड्राइव करते करते ना मेरे जहन में एक और बात आई कि ज़ूकू इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल मार्वल. बट ऑल दीज ब्यूटीफुल प्लेसेस कम विद अ कॉस्ट, यू नो. एंड बाय कॉस्ट मेरा मतलब पैसा नहीं है. मेरे कहने का मतलब है द इन्वायरमेंटल कॉस्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद कमिंग टू दीज प्लेसेस. बिकॉज आखिर जितना भी कचरा है वो कहाँ जाता है? हम लोग चाहे कितने भी डस्टबिन का इस्तेमाल कर लें, वो पड़ा तो पहाड़ों पे ही रहता है ना. हम लोग कितना भी क्लीन अप ड्राइव कर लें, कहाँ जाएगा ये सारा कचरा? Somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. So here I have Matthew Vizo with me and he's the current caretaker of the dormitory and the valley. How do you think people can stop polluting the valley? The best is to stop bringing plastic to the valley. Yeah. So do you think there should be a ban on plastic? Yeah. There should be. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our marks to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. So आज हमारा literally पूरी ट्रिप का like an 11-day ट्रिप का आखिरी दिन है. Phew, seriously, it was a very long trip but filled with so many different things. ऐसी तेरी कितनी trips रही हैं पहले? I mean, I have had long trips, but we did so many different things. It feels like we've been traveling for a month now. It does, honestly. और आज का भी दिन is not fully complete because हमने जितना भी trash collect किया था during our hike to Zuko Valley, we are going to be segregating all of that trash, all the trash that we could manage to bring back because honestly that hike was so intense. We couldn't bring back as much trash. हम लोग जितने भी bags वापस ला पाए, which were about like I think 10 bags because we were quite a lot of volunteers. We are going to be segregating all of that trash today. So we started plastic in that bag? Or can I put it? यार at the end of the day ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको कचरा दिखाने के लिए नहीं बनाई है. Happy. Let's count, bro. Who's winning? सबको पहाड़ों पे ट्रैवल करना आज की डेट में पसंद तो आता है बट यार उसकी वजह से जितना हमारा कचरा जनरेट होता है, जितना प्लास्टिक बचता है, जितनी उन डेस्टिनेशंस पे लोड बढ़ता है, वो अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Because if we don't try, who will? और कितना आसान है अवॉइड करना. एटलीस्ट ये जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, पेट बॉटल्स होती हैं, अपनी खुद की बॉटल कैरी करो यार. कितना मुश्किल होता है. फिल्टर बॉटल में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो तो कोशिश करो माइंडफुली थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट. हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता पर कोशिश तो कर सकते हैं ना खुद की सोच बदलने की, और कह सकते हैं ना खुद से कि मेरे होने से फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक इंसान से ही तो जुड़कर अनेक बनते हैं. और कह सकते हैं ना खुद से कि जब तक मैं जिंदा हूँ और सोचने के काबिल हूँ, मुझे पल भर की असुविधा मंजूर है, पर मेरे होते होते ये दुनिया बिगड़ने दूँ ये हरगिज़ मंजूर नहीं है.
लारिसा तूने कितनी चाय पी ली? 3 तुझसे तो कम. हाँ वन कप लेस. बिकॉज ठंडी हो गई. यार बातें नहीं हो पा रही यहाँ पे. बातें नहीं हो पा रही हैं. लबलबा रही है. रुक जा. हाँ. It's a very beautiful prawn, yeah, I have never seen such a green prawn.